टुडे वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 1 अपलोड हो चुका था, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 तक सवाल हो चुके थे, तो बाकी रिमेनिंग थे और बाकी की पीडीएफ अभी तक नहीं आई। सो आई एम जस्ट अपलोडिंग इन अ वीडियो। सो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका जो आंसर है दैट यू विल फाइंड इट ऑन दी पेज नंबर 133 एंड पेज नंबर 113 and 110. In 110 you will find out the viral diseases in men, which is 4 hepatitis, herpes, poliovirus, और यहाँ पे कॉटन लीफ कॉल डिजीज़, और यहाँ पे हमारे पास एनिमल, that was about plant and it is about animal, chikungunya, dengue, ebola, hepatitis C virus, measles virus, coronavirus, and etc. And now we are starting from the question number 8, and we are gonna look at the question first. Actually, what is the question say? Where is this? Here we are having the question number 8. List down the sequences involved in the lytic and lysogenic life cycle of bacteriophage. लाइटिक और लाइसोजेनिक दो हमारे पास लाइफ साइकिल थी बैक्टीरियाफेज की, दैट हाउ फेज वायरसेस इन्फेक्ट्स अ बैक्टीरिया। सो सबसे पहले हम लोग लाइटिक साइकिल्स को देख रहे हैं। लाइटिक साइकिल, द लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स: phage attachment, genome penetration, biosynthesis of phage DNA, biosynthesis का मतलब होता है replication of phage DNA, maturation, lysis and release of phage virus। अब हमारे पास lysogenic cycle है। The lysogenic life cycle of bacteria includes the following step, which is attachment, wait a minute, attachment, penetration, integration, replication, and induction. And I will share you the whole question 8 pic at the end. Now here we are having question number 9. Viruses cannot survive for a long period of time outside of a host cell because they depend on host cellular machinery to replicate. Once a virus is outside of a host cell, it becomes inactive and is known as virion. Means अगर जो virus होगा without host cells living कर रहा होगा, that is not called virus, that's called virion. A virion is essentially a package of genetic material surrounded by a protein called capsid. Some viruses can remain infectious for varying period of time outside of a cell depending on type of virus. मीन्स कुछ वायरस होते हैं जो होस्ट सेल्स के बगैर अपना सर्वाइवल कर लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे वायरस भी हमारे पास आ जाते हैं जो कि अपना सर्वाइवल नहीं कर पाते विदाउट अ होस्ट सेल। फॉर एग्जाम्पल, वेट अ मिनट, for example, some viruses can survive on the surface for hours or even days, while the others survives only few minutes. Therefore, without a host cell to infect and replicate, and viruses can't survive or reproduce. Means ये जो host cells के बगैर सर्वाइवल हो रहा है ना वायरस का, that is not viruses, that are viroids, और इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। Now we are having question number 10. What is the question number 10? What are the symptoms of AIDS? Okay, what are the symptoms of AIDS? Here we are having the symptoms of AIDS. In the beginning we have HIV infections first of all, then fever, then flu, then headache, then chills, night sweats, fatigue, and rashes. Then जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता जाता है उसकी लाइफ बढ़ती जाती है, हमारे पास बहुत सारे सेवियर सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे कि पर्सन एक्सपीरियंसेस सेवियर सिम्टम्स लाइक persistent diarrhea, weight loss, cough, shortness of breath, confusion,
forgetfulness, septicemia, dementia, herpes, influenza, destruction of T lymphocyte, and at last leads to the dangerous diseases like pneumonia, cancer, and then to the death. These were all about the AIDS. Now we are having question number 11. What is it? What is the prevention and control of AIDS? question number 11 हमारे पास यहाँ पर है. Control and preservation of AIDS. HIV टेस्टिंग सबसे पहले हमने करवानी पड़ेगी. देन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होगी. एजुकेशन और अवेयरनेस होनी चाहिए किसी भी इंडिविजुअल को जो HIV इन्फेक्शन से गुजर रहा है. प्रोवाइडिंग ड्रग्स अगेंस्ट HIV मीन्स मेडिसिन प्रोवाइड करना टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ HIV. स्प्रेड ऑफ HIV, वन शुड टेक प्रिकॉशनरी मेजर बिफोर सेक्सुअल इंटरेक्शन. सेक्सुअल इंटरेक्शन से सबसे पहले वो मेजर्स लेने पड़ेंगे प्रिकॉशनरी, जो कि इंडिविजुअल जो HIV जिसमें हुआ हुआ इन्फेक्शन. रिमेन इंटैक्ट विद रिलीजियस इस्लामिक प्रीचिंग. रिलीजियस इस्लामिक प्रीचिंग से इन कॉन्टेक्ट में रहना है. गेट वैक्सीनेटेड. शेयरिंग नीडल्स शुड बी अवॉइडेड. नीडल्स से खून भी कभी कभी लगे होते हैं इन द नीडल्स व्हेन वी आर पासिंग द मेडिसिन्स टू द नीडल्स. तो उसमें एक पेशेंट का जो ब्लड होता है, उसके ब्लड में जो डिजीज़ होती है, दैट कैन बी ट्रांसफर टू अनदर वन एज वेल. So here we are having the last question, where that is question number 12. Differentiate prions and viroids. अब prions और viroids के बारे में differentiation करते हैं. So here we are having question number 12. Viroids. Small circular RNA molecules. It infects plants. Don't bear protein coat. Don't encode any proteins. Replicate by host plants enzyme. और ये symptoms कैसे कैसे कॉज करते हैं? Stunted growth, leaf curling and reduced yield. ये प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, एनिमल्स को नहीं करते हैं. इनमें जिनोम जो होता है RNA होता है. ये इनमें प्रोटीन कोड नहीं होता. ये किसी प्रोटीन को इनकोड भी नहीं कर सकते. और ये रेप्लिकेट कैसे करते हैं? होस्ट प्लांट्स एंजाइम्स के जरिए. नाउ हियर वी आर हैविंग prions. Wait a minute. Infectious proteins infects animal and human. Don't contain any genetic material. They are misfolded version of normal protein in a body. This causes accumulation of abnormal protein in brain. These causes number of neurological diseases. ये इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं. ये एनिमल्स और प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं. ये इनके पास कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, नीदर DNA नॉर RNA मॉलिक्यूल. दे आर द मिसफोल्डेड वर्जन ऑफ नॉर्मल प्रोटीन इन द बॉडी. और ये जो है एबनॉर्मल प्रोटीन की ग्रोथ ब्रेन में पैदा कर देते हैं, जो कि बाद में न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ का सबब बनती हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रीवियस चैप्टर नंबर 5 ए सेलुलर लाइफ. Remaining short question and answer of the book exercise, and I hope you got it. लेकिन इसकी जो photos हैं I will upload as a shorts, so watch that one as well. So Allah Hafiz.